Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to do words for the week. As you can see, I have written first word also. But before starting this, I want to apologize that I haven't made video last Sunday because I have already told you that I will be making videos every Sunday of words for the week, but I haven't made that as I am having my exam. So today I have taken this topic so that I should make this video words for the week, and as I have already told you, you should make one notebook and note down these all words. It will enhance your vocabulary, grammar skills and pronunciation and the memory to recognize these words. Okay, because some words are synonyms of each other that I have told you in my previous video. Some are opposite of that, antonyms, or some are very new for you as you haven't heard that before. So you should make one separate notebook and write these all words that are new for you. If you know this word already, ignore this, or you should see that once again so that you can remember that. So let's move on to the first word, that is verbose. That is verbose. Okay, verbose. So verbose, the meaning is use too many words. Means verbose is typically a person, you can say a person who use too many words, बहुत ज़्यादा words use करता है अपने sentences में, अपने काम में, अपने answers में, हर जगह. Okay, use too many words. And what's the example that I have written? I have written example, that is, the verbose man took 30 minutes to give me a simple answer. Now, I think you already understand this. What's the example of this? Because the example is so easy. The verbose man took 30 minutes to give me a simple answer. एक verbose man कौन होता है? जो कि use too many words, जो बहुत ज़्यादा words use करते हैं अपने sentences में. So here I have taken example of answer. So verbose man took 30 minutes. उसे लगभग हाफ एन आवर लग गया एक सिंपल सा आंसर देने के लिए. टू गिव मी अ सिंपल आंसर. द वर्बोस मैन टुक 30 मिनट्स टू गिव मी अ सिंपल आंसर. सो हियर्स द example of verbose, or you can say one more example. I am not writing that, but I am speaking, so you can listen that. Like legal writing is often unclear and verbose. जो legal writing होती है, जो legally जो writings होती हैं legally, that contain many things that are written like verbose. Like the things are written very means the words are written very, means many words are written there, because and there is no need of that. Okay, जो words जो हैं वो बहुत words लिखे हुए हैं, और मतलब जैसे आपने एक sentence लिखा I am a girl, and आप उसी को हर जगह मतलब इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो. दैट इज अ सेंटेंस कंप्लीटली लाइक verbose. Verbose can be a man or a thing which use too many words. Means the verbose man took 30 minutes to give me a simple answer. Now, if you remember in my last video of words for the week, okay, words for the week की वीडियो में I have told you the sixth word, that is pleonasm. That is pleonasm. I hope you have written this or you have taken screenshot. Verbose क्या होता है? Verbose is a man who use too many words. वो बहुत ज़्यादा words use करता है एक अपने simple sentence या कहीं पे भी जो भी वो बात करता है. और simple अगर वो ज़्यादा बात करता है मतलब not sufficient, that we call in Hindi like बातूनी. And verbose, I hope you understand the verbose. I have given you example also. And second example is also I have given you, that is legal writing is often unclear and verbose. जो legal writing होती है वो एक ही चीज़ को बार बार मतलब many words में लिखे होते हैं, काफ़ी words में लिखे होते हैं. So in the last video of words for the week, I have told you one word, that is pleonasm. Pleonasm, I have told you this word pleonasm, which means using more words than necessary. काफ़ी words use करना जो कि unnecessary है. Words that is necessary means काफ़ी वर्ड्स यूज़ करना, बट वो इतने करने की ज़रूरत होती नहीं है, बट पीपल यूज टू डू दैट. सो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड
pleonasm. But if you relate this with this, verbose, so you find that these are synonyms. Like I am writing here, pleonasm. Okay, pleonasm. I hope you understand. My writing is clear to you. Let me write that correctly. So pleonasm. Pleonasm. Now I hope you understand this. So pleonasm, this is L. So pleonasm भी इसका एक synonym है. You can use pleonasm also. Like in my previous video, I have given you example like, let me remember that. The example is I heard it with my own ears. मैंने अपने खुद के कानों से सुना. जब अगर मैं बस ये लिखती I heard it means मैंने सुना. So obviously हमने अपने ear से ही सुना होगा. So but in that sentence what I have written I heard it with my own ears. मैंने अपने खुद के कानों से सुना. अब जब भी चीज़ कोई बोलेगा तो हम अपने ईयर से सुनेंगे, तो हमें with my own ears लिखने की ज़रूरत नहीं थी. Let me write that again also so that you can understand more clearly. So the last video में जो मैंने word use किया that is pleonasm. That is pleonasm, which means same, means antonym. I haven't written that this is word number 2. This is a synonym. Let me write this also. Synonym of verbose. So verbose का synonym है. Pleonasm का मतलब भी यही था. Using more words than necessary. Using more words than necessary. So the example that I have told you, that is, इसको साइड में रख लो, that this is a synonym of verbose. And pleonasm का मतलब ये है using more words than necessary, मतलब similarly to verbose only. And what I have written, the example that I have written is I heard it with my own ears. I heard it with my own ears. So this is the example in my previous video that I have told you. So now what's the meaning? Like I heard it with my own ears. अगर मैं बस I heard it तक बोलती, okay, if I will speak only this, I heard it. So I heard it means मैंने सुना. Okay, so I heard it मतलब मैंने सुना, मैंने अपने कानों से ही सुना होगा. I have heard that from my ears only. But I have written this also with my own ears, अपने खुद के कानों से, means this is not necessary. So अगर मैं I heard it तक भी लिखती तो भी वो sufficient था. But with my own ears, मेरे खुद के कानों से, means मैं इसी बात को और elaborate कर रही हूँ. Means that's the meaning of pleonasm. And pleonasm is a synonym of verbose, or you can say verbose is a synonym of pleonasm. So I hope you understand the comparison. And I have told you this word with example and with meaning. So I hope you understand this. So now this second word is, first let me erase this and then I will be writing second word and its example. So now I have written second word also and the example also. So second word is warping. What is warping? Warping means I am side by side I am telling you pronunciations also. So warping means bow and ping means warping. Warping is the pronunciation of this particular word. So warping means very big or large. Very big or large मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, very big, very large. Okay, example is the company made a whopping $75 million loss. जो कंपनी है उसने बहुत बड़ा means $75 million का loss हुआ उस कंपनी को, particular कंपनी को. Here I haven't mentioned the name of the company. It is just an example जिसमें whopping means $75 million जो बहुत बड़ी amount है. So that's why I have taken this example so that it will satisfy this above
name means this word whopping. So the company made a whopping $75 million loss. So I hope you understand this word also, because the word is very simple, that means very big or large, बहुत बड़ा. Whopping means I'm just telling you these words so that you can use these words instead of saying very big, very large. Like this is a very big building means हम वैसे huge बोलते हैं, but if someone is saying very big building, very huge building, so you can say whopping. But this whopping, if I tell you that this whopping is mainly used for numbers like $1 million or these dollar signs, and this means amount, I guess. Quantity के लिए ज़्यादातर use होता है whopping. Otherwise we can use this with words like if you have to say very big or large किसी sentence में और किसी भी चीज़ में अगर आपको very big या large कहना है, so you can say whopping, but mainly it is used for quantities or amounts mainly. So I hope you understand the second word, that is whopping. So now I am writing the third word, that is also very easy and you can use that word in your day-to-day life. So let me first write it and then I will be telling you what's the meaning and example, and I will explain you simply, okay. So the fourth word is farosh. Okay, farosh. We don't pronounce it as we will be pronouncing it like farosh. Okay, farosh. This is the pronunciation. And many people, if you will see this word first time, you will be pronouncing it like faroche, 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 something like this. But this is absolutely a wrong pronunciation and it will give bad impact, bad impression. Simply, it will give you bad impression on your personality if you will speak wrong pronunciation like faroche, but the correct pronunciation is faroche. Okay, faroche is not a correct pronunciation. The correct pronunciation is farosh. You will be pronouncing it like farosh, farosh. You will not be pronouncing like roshche, ye rosh. No, farosh. I am speaking it again and again, like farosh, farosh, farosh. So this is the correct pronunciation of farosh, farosh, and the meaning is a shy person. Means a shy person. Means शर्मीला. जो व्यक्ति है वो बहुत शर्मीला है. He is a shy person. Okay. A shy person को हम simply कह सकते हैं farosh. अगर कोई भी आपको शर्मीला पर्सन दिखे या जो शर्मीला है, आप उसको अ शाय पर्सन की जगह अगर आप उसको वर्ड यूज करोगे farosh, that will give you good impression. Okay, good impression. So I have written example also like many of the women in these stories are farosh. Means काफी women जो इस काफी. Now I have told you in my many videos, I have told you that the correct pronunciation of woman, I have told you woman, women, woman. So here what's that? This is woman. Okay, no, women, because men means pronunciation, means plural, and if I will write WOMAN, then it will be woman, but here it will be women, women. So I am telling you side by side this pronunciation also, that is women. Okay, women. Many of the, पर काफ़ी जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो वो है, ओ लिखा है and men, but no, the correct pronunciation is women, not man, men, women. So women is the correct pronunciation of this. So many of the women in these stories are farosh. काफ़ी women जो इन stories में हैं वो हैं farosh, that who are shy, means women are shy in these stories. And this is the first example and this is the second example where I have told you he is a bit farosh. वो थोड़ा बहुत जो है वो shy है. He is a bit farosh. So this is the second example and this is the first example.
So first example is also clear to you and second example is also clear to you, and the meaning is a shy person, that is ferosh. Means many of these women in these stories are ferosh. काफ़ी women जो इन stories में हैं वो जो हैं वो shy हैं, means they are ferosh. And second is he is a bit ferosh, वही कुछ जो है वो ferosh है, ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा भी shy नहीं है, but he is okay. So he is a bit ferosh. So now the next word is, first let me erase this and then I will be telling you. So the fourth word is abstruse. Okay, some of you pronounce it like abstruse and some of you pronounce it like abstruse. So both are correct pronunciations. Okay, abstruse is the abstruse is the correct pronunciation of this particular word. So the meaning is hard or difficult. Means hard or difficult, so these are synonyms, means समानार्थी शब्द, समान ही इनके अर्थ. ओके, सो हार्ड, डिफिकल्ट मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो समझने के लिए जो मुश्किल हूँ. ओके, हार्ड टू अंडरस्टैंड. सो एग्जाम्पल क्या है इसका? मैथ्स इज अ मिक्स ऑफ एब्स्ट्रूज थ्योरी एंड डिटेल्ड कैलकुलेशंस. जो मैथ है, मैथ्स में अब आपको पता है सब्जेक्ट्स में थ्योरी भी होती है और कैलकुलेशंस भी होती हैं. सो इसमें बोला है कि मैथ्स इज अ मिक्स ऑफ, मिक्स है जो थ्योरीज हैं, हार्ड थ्योरीज जो समझने के लिए बहुत वो होती हैं, समझ नहीं आती, हार्ड टू अंडरस्टैंड. मीन्स मैथ्स इज अ मिक्स ऑफ एब्स्ट्रूज थ्योरी एंड डिटेल्ड कैलकुलेशन, एंड कैलकुलेशंस आर आल्सो इन डिटेल्स. सो दिस इज द sentence that is satisfying this above word. abstruse means hard to understand. काफ़ी चीज़ें जो है वो hard है समझने के लिए. So the example I have told you, maths is a mix of abstruse theory and detailed calculations. And the next example, I have written two examples. The second example is Einstein's theory of relativity is very abstruse. आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी की जो थ्योरी है आइंस्टाइन की, वो जो है वो बहुत एब्स्ट्रूस है, बहुत समझने के लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है इन हिंदी. सो हार्ड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मीन्स एब्स्ट्रूस का मतलब सिंपली यही है जो कि समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है, और हार्ड होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जो मैथ है वो मिक्स है थ्योरी और कैलकुलेशन की. जो थ्योरी जो है वो हार्ड है एंड डिटेल्ड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो होगी हार्ड जब वो डिटेल में है तो. सो सिंपली द वर्ड इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस सेंटेंस ऑल्सो एंड दिस सेंटेंस कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वाली थ्योरी जो बहुत एब्स्ट्रूस है, बहुत हार्ड है समझने के लिए. सो फोर्थ वर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ अब तक हमने 4 वर्ड्स कर लिया. फर्स्ट वर्ड इज वर्बोस, सेकेंड इज वॉपिंग, थर्ड इज फेरोश and fourth is abstruse. Okay, so let's move on to the fifth word. So the fifth word is also very simple, that is socru. Socru. Okay, the pronunciation is this only, that sock and ru means socru. Socru is the pronunciation. Socru, that means a notable success. बहुत अच्छी, जो कि notable है, बहुत अच्छी है, means not अच्छी but हम उसको याद रखते हैं, नोटेबल सक्सेस. ओके, बहुत अच्छी, बहुत मेहनत की हुई. अब आपको पता है सक्सेस तो मेहनत से ही होती है, हार्ड वर्क से ही आती है. सो हियर अ नोटेबल सक्सेस, सॉकरू मीन्स अ नोटेबल सक्सेस. सो आई थिंक द मीनिंग इज क्लियर टू यू एंड द एग्जाम्पल इज हर परफॉर्मेंस वॉज अ सॉकरू. उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक तरह की नोटेबल सक्सेस है, मतलब एक तरह की सॉकरू है, एक तरह का इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की उसने कि वो जो है मतलब याद किया गया उसे लोगों ने. मतलब होता है ना जब आपने कुछ ज़्यादा अच्छा काम किया हो तो लोग आपको याद करते हैं, हाँ इसने वो कंपटीशन तो ऐसे जीता था. लाइक वी यूज्ड टू डू विद युवराज सिंह दैट ही हैज़ डन 6 sixes in 6 balls. 6 बॉल्स में 6 सिक्सर्स लगाए थे, 6 छक्के लगाए थे. सो हम उन्हें याद रखते हैं ना उनकी परफॉर्मेंस की वजह से. दैट इज ऑल्सो अ नोटेबल सक्सेस. सो आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ युवराज सिंह ऑल्सो. सॉकरू अ नोटेबल सक्सेस एंड एग्जाम्पल इज हर परफॉर्मेंस वॉज अ सॉकरू, और यू कैन से हिज परफॉर्मेंस एज, अगर हम युवराज सिंह की बात करें तो ही इज अ मेल, हर इज यूज्ड फॉर फीमेल, आई हैव टोल्ड यू.
So I hope you understand this word fifth, that is socru. And now let's move on to the sixth word, that is, so the sixth word is sinister. Sinister, we pronounce it like sinister, means simply जैसे आपको वर्ड दिखेगा वही प्रोनाउंसिएशन है, इसकी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है. द वर्ड इज सिनिस्टर, मीन्स सिनिस्टर. सो व्हाट्स द मीनिंग? सो द मीनिंग इज सीमिंग एविल और डेंजरस, मीन्स दुश्मन, ये डरावना सा डेंजरस चीज़ जो हमें दिखे या लगे, दैट्स कॉल्ड सिनिस्टर. और यू कैन सिंपली हम क्रिमिनल भी बोल सकते हैं. और जो थिंग्स means making you feel, the things that make you feel that something bad will happen, कुछ गलत होगा, कुछ bad होगा. So that's also coming under sinister only. So sinister के क्या मतलब निकले? Means simply can be a criminal also, or can be a seeming means evil या dangerous thing, और कुछ bad, कुछ गलत होने वाला है वो भी लग सकता है. So the example that I have told you is that I have written, that is, he looked at me in a sinister way. उसने मेरी तरफ देखा जैसे कि वो सिनिस्टर है, मीन्स जैसे डेंजरसली या क्रिमिनली. क्रिमिनल्स के तो आपको पता है डरावने ही होंगे ना, वो कोई आपको हंस हंस कर तो बात करेगा नहीं. क्रिमिनल मीन्स दे यूज टू डू दिस ऑल्सो, हंस हंस के बात करते हैं तभी तो काम निकलेगा उनका. मीन्स एविल और डेंजरस. सो ही लुक्ड एट मी इन अ डेंजरस वे और in a evil type way. So that's also coming under sinister, and this first sentence is satisfying this word, like he looked at me in a sinister way. And the second word is the storm outside gave the room a sinister way. जो तूफान, जो storm आया बाहर, उसने जो है वो कमरे को gave the room a sinister way, मतलब एक डरावनी सी, एक कुछ जैसे अगर देखा होगा तूफान आया है, तूफान आता है बहुत तेज वाला. आई हैव फील दैट स्टॉर्म व्हेन आई वाज देयर. लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक. सो द स्टॉर्म आउटसाइड गेव द रूम अ सिनिस्टर वे. ओके, सिनिस्टर वे मतलब क्रिमिनली, डेंजरसली, एक ऐसा, अगर ज़्यादा तूफान आता है तो डर तो जाते हैं ना लोग. अगर तूफान आएगा सारे पेड़ वगैरह हिलेंगे इतनी ज़ोर ज़ोर से. सो आई हैव फील दैट. बट अगर ये आपके साथ हकीकत में होता तो आपको डर तो लगता ना, डेंजरस, कि हम कहीं कुछ हो ना जाए. सो स्टॉर्म आउटसाइड गेव द सिनिस्टर वे, मीन्स सिनिस्टर का भी तो वही मतलब है, सीमिंग एविल और डेंजरस. अब एविल और डेंजरस आपसे बातें तो नहीं करेंगे, वो कुछ करने ही आए होंगे ना, उनका कोई मोटिव ही होगा ना कि हमें हाँ ये चीज़ लेनी है, ये चोर हैं जो क्रिमिनल हैं, कि हमें इन्हें गोली मारनी है, वी हैव टू किल देम. सो दैट्स टाइप ऑफ फीलिंग. द स्टॉर्म आउटसाइड गेव द रूम अ सिनिस्टर वे, मीन्स एक बहुत सी डरावनी सी वाइब ला कर आ जाती है. ओके, सो सिक्स्थ वर्ड सिनिस्टर इज ऑल्सो क्लियर टू यू. एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज द लास्ट वर्ड फॉर द वीक, दैट इज, so the seventh word and the last word for the week is gullible. The pronunciation is here also very simple, that is gullible only. So gullible, gullible, gullible. So gullible is the pronunciation, which means trusted easily. Trusted easily means a person is there who trust very easily. वो किसी पे भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, means the person. Here the gullible is used for that person who trusted everyone. वो ट्रस्ट एवरीवन. ओके, हर किसी से ट्रस्ट कर लेता है. ही इज अ वेरी ट्रस्ट गलीबल पर्सन, लाइक ट्रस्टेड इजीली. सो द एग्जाम्पल इज, आई डिडंट रियलाइज दैट टॉम वॉज सो गलीबल. टॉम है, हेयर आई हैव रिटन वन नेम, टॉम. यू कैन राइट एनी नेम, means not any name, this is just for example to understand this word. So I didn't realize that Tom was so gullible. मेरे को पता भी नहीं चला, मुझे इतना रियलाइज भी नहीं हुआ कि टॉम जो वो इतना गलीबल है, मतलब वो इतना किसी पे ट्रस्ट कर सकता है. ओके, I didn't realize that Tom was so gullible. So that's the meaning of this word gullible. So gullible means trusted easily, and here the definition is, example is, I didn't realize that टॉम वॉज सो गलीबल, कि टॉम इतना ट्रस्ट कर लेता है किसी पर भी. सो आई डिडंट रियलाइज दैट टॉम वॉज सो गलीबल. सो हेयर
let's take one briefly. I will be telling you every word. That is, first word is verbose, means using more than words that are necessary, means काफ़ी word use करना जो कि जिनकी ज़रूरत नहीं भी होती. So that's called verbose. And second word is whopping, means very big or large. Okay. Farosh means a shy person, farosh. And fourth word is abstruse, that is hard to understand, जो बहुत मुश्किल है समझने के लिए. Okay. And fifth word is socru, means a notable success, एक success that is very very notable. I have told you example of Yuvraj Singh. And sixth word is sinister, means a type of criminal, or you can say where we find the feeling that something bad will happen or something seeming like evil or dangerous. So that's called sinister. And the seventh word and the last word, that is gullible, which means a person that trusts another person very easily, trusted easily. I didn't realize that Tom was so gullible. मेरे को पता भी नहीं चला, मैंने इतना realize भी नहीं किया कि Tom जो वो इतना gullible, इतना trust कर सकता है. So that's all for this particular video of words for the week. I hope you like it. If you like it, do like, share, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.